जामिया तुल मदीना तुल इल्म में माशाल्लाह इंग्लिश में जो है वो तकरीर करेंगे। ऐसे ही मोहम्मद शफाकत साहब, क्योंकि अभी कारी साहब ने बताया कि ये जामिया तुल मदीना जो है वो स्कूल भी है यहाँ पर, जो कि दीनी तबलीग दी जाती है। यकम था 5वीं क्लास तक यहाँ पर जो है वो स्कूल भी है। ये 5वीं क्लास के तालिब इल्म हैं। इंशाल्लाह अभी आप सुनेंगे जनाब मोहतरम मोहम्मद शफाकत साहब अपने गुफ्तगू का आगाज़ फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। Respected teachers and dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today the topic of my speech is Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam is the last messenger of Allah. The life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam is a role model for every person of this world who believes in Allah and the day of judgment. This source of light and guidance can lead us completely. The world has seen a lot of scholars, philosophers and preachers, but none was as great as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah sent his messengers in every period of history to guide the humanity. The world had been waiting for the last prophet for centuries. This long wait was ended with the prophethood of the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. He was sent as the last prophet of Allah Almighty. His Sharia was regarded as the last message of Allah, and the previous Sharias were abolished. His guidance was declared sufficient for all till the end of this world. Thank you so much and Allah Hafiz.